by using these powers. If that's not judicial overreach, is that the constitutional concept of voting in prime ministers and voting out? Have you ever heard of a British prime minister being tried by the courts of UK and dismissed so that somebody else can be brought in? But yet these were done. These things were done. At whose behest and to whose benefit? Courts, unfortunately, became politicized. Courts, unfortunately, started taking political sides instead of sticking to the letter and the spirit of the Constitution. They started behaving like politicians. They started playing politics almost on a day-to-day basis. The tool of suo motu powers was abused again and again. And I must say that we take the blame for not having acted in time. Because when the Constitution gives certain rights to the judiciary and the Chief Justice, it does not give other rights. It does not give the right of suo motu decisions without any due process of law taking place and no right of appeal. Only Allah Ta'ala has the power where there is no appeal and there is no due process. And yet in his own ways, he does have a due process. But this power was usurped in order to take decisions. It's perfectly true that there were times when a larger public good was taken into consideration. But the Constitution itself talks about a due process, that no decision can be taken without due process, and yet suo motu has no due process. One person can decide. A case may be at trial court level, a case may be at high court level, but yet you can scuttle the entire process and just take it directly under the suo motu powers. And once you have decided, there's no right. You cannot appeal to anybody. You cannot talk to anybody else. And that has got a finality. This is not something which either the framers of the Constitution has envisaged, nor should the Parliament tolerate. Mr. Speaker, once again this challenge has been thrown at us. Once again we are standing where we need to make a decision. Are we going to silently allow the spirit of the Constitution to be trampled, or are we going to move forward to ensure natural justice? Because without justice, no society or country can exist. And natural justice only says that when you are questioned on something, you are accused of something, then you should have a full power and the right to present your case. Though I know that I will be transgressing by talking about an ongoing case, yet is it not fair to ask that if my fate is to be decided, if my fate, there's a decision being made about how long the assemblies will last, how long the elections will take place, and under what circumstances, and I'm not even being given a right of representation. I'm being denied. The political parties are not even being allowed to stand up and present their case. Then what should I expect? What kind of a justice should I expect for myself? If the entire length and breadth of the political forces sitting here in this House
They want, because they have a stake, they have an interest. Their future is to be decided, and yet we don't want to do it. And we say it's a clear-cut, black and white case. If it was so black and white, Mr. Speaker, then so be it. Let all the judges of the court sit together and take the decision. If it's so one-sided, the Constitution is to be interpreted not through the lens of certain limited people, but through the entire judiciary that sits there in that exalted Supreme Court of ours. Let all the judges give their wisdom in interpreting the Constitution today, because Pakistan will be different once we are done with this decision, be it by this bench or be by the entire court. Pakistan will not remain the same. So let us make a decision which has a permanence, which is accepted by the entire 220 million people of Pakistan as being a fair decision. Our history is full of unfair decisions by the Supreme Court of Pakistan. Let us not repeat it once more. Let us tear away those pages which gave us the concepts of doctrine of necessity and which hanged elected prime ministers and which dismissed one after another prime ministers. Let's have a fair deal here. Let's have a decision which history will write in golden words. This is an opportunity for the Supreme Court of Pakistan today. And this is also an opportunity for Parliament today. Both the institutions have to rise to the occasion and give us decisions that have a longevity and that are acceptable to the entire nation. Thank you very much, sir. नहीं असद महमूद साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन बैठे हैं लीडर ऑफ द जनाब रमेश कुमार बैंकवानी साहब थैंक यू सर आज का दिन बहुत अहम है मैं प्राइम मिनिस्टर साहब की तवज्जो चाहूँगा अगर मेंबरान अगर बैठ जाएं थोड़ा सर आज जुमे के दिन था कि जब जॉइंट सेशन हुआ प्राइम मिनिस्टर के आने का प्रोग्राम था मगर आज आए उन्होंने एक अच्छी स्पीच की और नवीद कमर साहब तो हमेशा अच्छी बात करते हैं बात की गई कि पाकिस्तान है तो हम हैं पाकिस्तान खुशहाल हैं तो हम खुशहाल हैं बिल्कुल अच्छी बात है मैं समझता हूँ यही सोच हर पार्लियामेंटेरियन की होनी चाहिए हर पॉलिटिकल पार्टी की होनी चाहिए और साथ में पॉलिटिकल मैच्योरिटी भी होनी चाहिए इदारों की मजबूती जैसे पार्लियामेंट की अहमियत कैसे बढ़े सारे पार्लियामेंटेरियन का काम है जुडिशरी की अहमियत कैसे बढ़े उसमें सारे जजेस का काम है मेरा ताल्लुक जुडिशरी से भी बहुत है मैं समझता हूँ इस वक्त एक आला अदलिया के हवाले से जो काफ़ी दिनों से जो चीज़ें चल रही है मैं समझता हूँ इसको भी अब किसी तरफ बैठना चाहिए और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि एक आला अदलिया के हवाले से भी ऐसी बातें चलती रहें कि उनके आर्डर जो है वो एक आखिर होता था और उसके आर्डर भी इम्प्लीमेंट नहीं हो उसके अंदर क्यों कोताहियाँ हो तो उस हवाले से जो आज डिमांड की गई है मैं समझता हूँ इदारे को उसके ऊपर बिल्कुल सोचना चाहिए पार्लियामेंट पाकिस्तान जो भी पॉलिटिकल पार्टी जब भी हुकूमत में आती है तो दो नारे ज़रूर लगाती है कि हम पाकिस्तान को मदीना रियासत
के मॉडल के ऊपर बनाएंगे, हम पाकिस्तान को यहाँ तक बनाएंगे, मगर कुर्सी के ऊपर बैठने के बाद चीज़ें थोड़ी सी पटड़ी से हट जाती है। जब प्राइम मिनिस्टर राणा साहब प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की दुपट्टे की, जब मैं पीटीआई में शामिल हुआ था तो मेरी एक ही शर्त थी इमरान खान साहब के साथ कि मैं पीटीआई का दुपट्टा नहीं पहनूंगा, और नहीं मुझे कभी जो भी पट्टा जो था पट्टा मुझे कहा, मैंने कहा नहीं पहनूंगा, और मैंने 3.5 साल तक कभी पट्टा नहीं पहना। मैंने कहा डॉक्टर रमेश की एक अपनी सोच है, अपनी आइडियोलॉजी है, और उस वक्त भी मैं ये कहता था कि खान साहब आप जिस इंतकाम की सियासत के ऊपर आए हैं, मैंने धर्म ये कहता है कि आपको जो आप करोगे आपको यहां पे ही भुगतना पड़ेगा, और वही अभी कुछ हो रहा है कि पहले उसने इंतकाम लिया, अभी इधर इंतकाम हो रहा है। पीछे कौन जा रहा है? पाकिस्तान जा रहा है। पीछे कौन जा रही है? अवाम जा रही है। इश्यूज जो है वो हमारे हल की तरफ नहीं जा रहे हैं। मैं हमेशा उस वक्त भी बात करता था, आखिरी पैगंबर का भी हवाला देता था, मैं नेल्सन मंडेला का भी हवाला देता था कि नेल्सन मंडेला से ज्यादा किसी ने जुल्म नहीं सहे, मगर उसने अपनी मुल्क की तरक्की की खातिर सारी चीजों को छोड़ के और मुल्क की खिदमत के खातिर दुश्मनों को भी साथ में बिठा के मुल्क की खिदमत की। मैं मानता हूं कि वो वक्त जब खान साहब की हुकूमत बनी, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि आए आप मिल के बैठें और हम इस मुल्क की खिदमत करें, मगर उस वक्त जो जवाब दिया गया खान साहब की तरफ से वो नेगेटिव दिया गया, और उसका नतीजा ये पहुंचा कि आज कहां पे पहुंचे हैं मुल्क। नाज़रीन, कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है, जिसमें रमेश कुमार इजहार ख्याल कर रहे हैं। उनसे कब्ल सैयद नवीद कमर ने इजहार ख्याल किया, जबकि पार्लिमानी अमूर के वजीर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने बहस का आगाज़ किया। नाज़रीन, खबरनामे का बाकायदा आगाज़ करते हुए सबसे पहले आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने खिताब किया, और इस इजहार ख्याल के दौरान उन्होंने कहा कि एक लाडला शख्स आइन और कानून की धज्जियाँ बखेर रहा है। लाडले की हुकूमत ने IMF मुआहिदे को तार किया। इमरान खान के गैर आइनी और गैर कानूनी इकदामात के बावजूद मुकदमात में उन्हें जमानतें मिल रही हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि इस लाडले को पाकिस्तान से मजीद खेलने से रोका जाए। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मुश्किल तरीन हालात से निजात